Coming to my public, Saras, about Saras. This is Raashii by side to make your accounting concepts clear. And today we are going to be learning a new concept of balance of payment. And I hope you all are already known about this because most of the people get confused between BOP and BOT. So in first part we learned about BOT and now we are going to be learning about BOP. So let's get started. So first of all, you must know that first we'll be understanding meaning. First, what is meaning? BOP is a systematic record of transactions. So BOP is a systematic record of transactions performed by entities of a nation with rest of the world. Second component, BOT includes both visible and invisible items, that is goods and services. Third, records. It is overall economic record of transactions of an entity with rest of the world. Basically, with citizen of nation to that of citizen of foreign country, and transactions related to goods, services, or capital services all are called capital nature transactions. Then comes capital nature transactions. BOP includes all kinds of capital nature transactions such as loan, funding, letter of undertaking, LOC, which is letter of credit. Then scope. BOP has a wider scope than BOT and includes BOT in it. Sixth scope के बाद we have economic status. It shows overall economic position because of capital nature transaction as well as economic performance, which is revenue nature transactions, in a holistic and complete manner. Then seventh, balance or result. It has no balance. Any net balance is equals to zero. All receipts is equals to all payments. And eighth is settlement. Unfavorable BOP cannot be settled by favorable BOP. This is the ideal situation. Ideally, this must be the situation. All receipts are short payments. Okay, now I'm explaining all of this. Component, records, capital nature transactions, scope, economic status, balance or result, and settlement. Here we go. First of all, what is BOP? BOP is a systematic record. BOP is a systematic record of transactions performed by an entity of a nation. A specific entity of nation performs transactions, be it any kind of transactions related to production, related to trading, related to capital exchange. All of these transactions performed by a citizen of a country with that of rest of the world we consider in balance of payment. Now, component, it includes both visible items, which are goods, as well as invisible items, which are services. Then records. It records overall, मतलब उसमें जो होता है ना BOP में, BOP सारे transactions रिकॉर्ड करते हैं एंटिटी के सिटीजन का विद सिटीजन ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी हमारे फॉरेन कंट्रीज होते हैं. ट्रांजैक्शंस जिसमें गुड्स भी आते हैं, सर्विसेज भी आते हैं, कैपिटल नेचर वाले ट्रांजैक्शंस भी होते हैं. तो हम ये इधर लिखते हैं, BOP इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस, चाहे वो हो गया लोन हो गया, या आपने किधर से फंडिंग उठा लिया, या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, कितने सारे बिल्स होते हैं, तो आप फंडिंग बाहर से भी करो तो वो भी इंक्लूडेड है. मतलब गुड्स वाले ट्रांजैक्शंस भी इंक्लूडेड है, सर्विसेज वाले भी इंक्लूडेड है. सर्विसेज कैसे, अगर आपने आउटसोर्स किया कोई सामान, वो इंक्लूडेड है. कुछ अपना बाहर बेचा, वो इंक्लूडेड है. किसी से फंडिंग उठाए बाहर की, तो वो इंक्लूडेड है. तो इसका कंपोनेंट है ऑल विजिबल एज वेल एज इनविजिबल आइटम्स. रिकॉर्ड में भी गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है, और कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस में भी फंडिंग और जितने भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, वो सब भी इंक्लूडेड है. और ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शंस का. एंड देन आता है स्कोप. जो BOP है उसका स्कोप है वो वाइडर है देन BOT. जो BOP है उसमें BOT इंक्लूसिव है. अभी इकोनॉमिक स्टेटस, जो BOP है वो ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक पोजीशन बताता है. परफॉर्मेंस कैसे, क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस, दैट इज वो इंक्लूड करता है गुड्स और सर्विसेज दोनों के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, एज वेल एज इट इंक्लूड्स कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन, जो इसकी इकोनॉमिक पोजीशंस बताता है. ठीक है, ओके. सो हम लोग को इकोनॉमिक का होलिस्टिक व्यू देता है. और अभी बैलेंस, जो हमारे BOP है इसका बैलेंस जो होता है, नेट बैलेंस, वो जीरो होता है. बिकॉज ऑल रिसीट्स, आइडियली ऑल रिसीट्स, गुड्स और सर्विसेज का रिसीट हुआ तो मैंने गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी अमाउंट एज अ कंसिडरेशन पे किया. सर्विसेज आया तो मैंने उसका एक्सचेंज में उनको पे किया. लोन लिया तो एक्सचेंज में इंटरेस्ट दिया. तो आइडियली ऑल रिसीट्स इज इक्वल टू ऑल पेमेंट्स, बिकॉज आप किसका उधार नहीं रख सकते हैं.
So net balance is 0, result is 0. और settlement unfavorable BOP of course can't be settled by favorable BOP. जैसे हम BOT में करते थे, unfavorable BOT can be settled by favorable BOP. Like imports अगर बढ़ा है तो unfavorable BOT हो गया, पर इसको exports बढ़ा के मैं settle कर सकती थी, पर इसमें ये चीज़ नहीं होता है. Okay, you all got it? The 4 points, the 8 total points. First meaning, then components, then records, then capital nature transaction, then scope, the economic status, then result and balance, and then eventually the settlement. Okay, so I'll highlight the specific points. First of all, we will consider it is a systematic record of transaction of an entity of a nation with rest of the world, and in component it includes both visible as well as invisible items. In records, it records transaction of goods, services, and capital nature transactions. Capital nature transaction are included in capital nature transaction. Examples are loan, funding, letter of credit, letter of undertaking. And BOP is wider than BOT. And economic status, it shows overall economic position as well as economic performance of a country. It has a net balance of 0. And settlement, it cannot be settled by favorable BOP. I hope you all understood, and if any doubts, let me know in the comment sections. Bye bye.